In this module, we shall discuss an interesting example regarding factor group computations. We now turn to several examples that compute factor groups. If the group we start with is finitely generated and abelian, then its factor group will be also finitely generated and abelian. Computing such a factor group means classifying it according to the fundamental theorem of finitely generated abelian groups. Now let's consider an example. Let us compute the factor group Z4 cross Z6 over 0, 1, cyclic group generated by 0, 1, or cyclic group generated by 0, 1 contains 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Total 6 elements. And in the group Z4 cross Z6, we have 24 elements. And in this way, in factor group, we shall have just 4 elements. And in other words, we shall have 4 cosets. Here, cyclic group generated by 0, 1 is the cyclic subgroup H of Z4 cross Z6 generated by the element 0, 1. Thus, H equal to 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 and 0, 5. Since Z4 cross Z6 has 24 elements and H has 6 elements, all cosets of H must have 6 elements, and Z4 cross Z6 over H, the factor group must have order 4. That is 4 elements, and we have 4 cosets with H. तो 4 कोसेट्स बनाने का ये वे है कि आप Z4 क्रॉस Z6 में से वो एलिमेंट पिक कर लें जो कि H को बिलोंग नहीं कर रहा. अगर आप H के अंदर से एलिमेंट लेंगे तो आपको 0, 0 या 0, 1, 0, 2 और 0, 3 और 0, 4 और 0, 5 को जब हम H में ऐड करेंगे तो हमारे पास H ही आ जाएगा. तो अदर देन एलिमेंट ले लें जो कि Z4 क्रॉस Z6 को बिलोंग कर रहा है लेकिन H को बिलोंग नहीं कर रहा. फॉर इंस्टेंस आप 1, 0 को चूज़ कर लें तो आपके पास एक न्यू क्लास आ जाएगी. और फिर इसी चीज़ को आप देखते हुए कि अब आपके पास जो 2 कोसेट्स आए हैं H और 1, 0 प्लस H, इनमें से कोई एलिमेंट आपने पिक नहीं करना ताकि आपके पास एक नई क्लास आ जाए. तो इस प्रोसीजर को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो टोटल 4 कोसेट्स हम आपके पास आ जाएंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे. Since Z4 cross Z6 is abelian, so is Z4 cross Z6 over H. और हमें मालूम है कि Z4 cross Z6 abelian ग्रुप है और इसलिए जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है वो भी abelian होगा. Remember, we compute in a factor group by means of representatives from the original group. और जो फैक्टर ग्रुप के अंदर हम कंप्यूटेशंस करते हैं, जब हम कोसेट्स को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि जी के वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेट हमारे सब ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे होते, तो उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स कह देते हैं. और इस तरह से हम जब वो चूज़ कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो उन्हें कोसेट्स को हम H प्लस H, आपके पास H ही आ जाएगा, या अगर आपके पास मल्टी यहाँ पे आपके जो पास जो ऑपरेशन है वो एडिशन है और जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और वो जी के अंदर एडिशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे और आपको कोसेट दे देंगे. In additive notation, the cosets are H equal to 0, 0 plus H, 1, 0 plus H, 2, 0 plus H, 3, 0 plus H. We have
4 cosets in the factor group Z4 cross Z6 over H. Since we can compute by choosing the representatives 0, 0, 1, 0, 2, 0 and 3, 0, it is clear that Z4 cross Z6 over H is isomorphic to Z4. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने वेरिएशन दी है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लिए हैं. पहले हमने उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर देन 2 एंड देन 3. तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए और सेकंड कोऑर्डिनेट को आपने तमाम के अंदर फिक्स किया हुआ है. So, in this manner, we can say that Z4 cross Z6 over H is isomorphic to Z4. Note that this is what we would expect, since in a factor group modulo H, everything in H becomes the identity element. That is, we are essentially setting everything in H equal to 0. Thus, the whole second factor Z6 of Z4 cross Z6 is collapsed, leaving just the first factor Z4. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड फैक्टर पूरे का पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि आप मॉडुलो H कंसीडर कर रहे हैं और H के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 एंड 0, 5 थे. तो वो सेकंड फैक्टर में वेरिएशन आ रही थी. जब आपने H से मॉड आउट किया तो सेकंड फैक्टर जो है वो पूरे का पूरा कोलैप्स हो गया और उसकी जगह पे हमारे पास सेकंड फैक्टर में 0 आ गया और फर्स्ट फैक्टर में वेरिएशन आ गई 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. तो टोटल हमारे पास इस तरह से 4 आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उनके साथ हमने कोसेट्स बनाए. सो Z4 cross Z6 is isomorphic to Z4.